We read the poem The Way Through the Wood. Before we start the poem, little know about the poet. Joseph Rudyard Kipling was an English short story writer, poet, and novelist. He is remembered for his tales and poems of British soldiers in India and his tales for children. Start, let's clear some word meaning. Below or under something, coppice, forest, heath, wasteland, overgreen with scrub, anemones, flower of various color, broods, a group of young birds all born at the same time. An omnivorous animal with grazing brown hair. Trout, a freshwater fish. Swish, move with the hissing sound. Catering, horse moving at a high speed. Mystery, foggy. Solitude, the state of being alone. The Way Through the Woods by Rudyard Kipling is a two-stanza poem made up of one stanza of 12 lines and another is 13. Kipling has chosen not to structure this piece with one particular rhyme scheme. Instead of rhymes scattering throughout the line. Let's start the poem. Shut the road through the woods 70 years ago. Weather and rain have undone it again. And how you would never know there was once a road through the woods before they planted the tree. It is underneath the coppice and heath and the thin anemones only the keeper sees. That where the ring-dove broods and the buggers roll at ease, there was once a road through the woods. The way through the woods means रास्ता जो कि जंगल से होकर जाता है. पोएट यहाँ कहते हैं कि 70 साल पहले यहाँ पे एक रोड हुआ करती थी. द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर स्टार्टिंग दैट वन पर्टिकुलर रोड वाज set 70 years ago. This first line is spoken as if the reader already has prior knowledge of the road, although 70 years have passed since anyone was able to travel this path. The speaker remember it well. 70 साल पहले जो एक रोड यहाँ पे हुआ करती थी वो आज नहीं है. वो अनडन इट अगेन क्योंकि वेदर और रेन की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. आज देखने से यहाँ पता भी नहीं चलता कि कहीं ये कभी यहाँ पे एक रोड भी हुआ करती थी. सिंस द टाइम द रोड वाज क्लोज द वेदर एंड रेन हैव अनडन इट ड्यू टू द फैक्ट दैट इट वाज नॉट मेंटेन द एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट इरेज इट इंटायरली. इफ वन was to come upon this place, how unaware of the history they would not know that whereas once a road through the woods. Nature has taken back the area that human had exclaimed. अभी आकर यहाँ अगर कोई देखता है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई रोड हुआ करती थी, क्योंकि ये पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है. नेचर जो ह्यूमन को ये रोड दी हुई थी वो वापस टेकन बैक, वो वापस ले चुकी है. Trees has been planted and grown up around the path, helping to scare what the left of the path. Now it once was searching for it, they would have go underneath the coppice and health. Underneath जो नीचे दब गई है, छोटे छोटे प्लांट जो 70 साल पहले वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट लगाया गया था वो अब क्या बड़ी बड़े ट्री में कन्वर्ट हो गई है और वो रास्ते को पूरी तरह से ढक दिया है. वो रास्ता भी एक फॉरेस्ट का ही पार्ट हो चुका है. Here the speaker is referencing a wooden area that is annually cut back to stimulate growth and health, or opposite. This is an area of uncultivated land. It can also refer to type of common scrub that grow wild. वहाँ पे छोटे छोटे से स्क्रब भी हो गए हैं जिससे वो पूरी तरह से ढक गया है और ये अनकल्टिवेटेड लैंड है तो यहाँ पे कोई खेती होती भी नहीं होती, साफ भी नहीं किया जाता है. वो रोड भी एक जंगल का ही पार्ट होकर के रह चुका है. कीपर इज नाउ द ओनली वन हु इज एबल टू सी बियॉन्ड द सरफेस लेवल ऑफ द वुड. दिस पर्सन सीज द रिंग डव ब्रूडिंग एंड प्रिपेयरिंग टू सीट एंड इंक्लूड eggs. Their position allowed them to see the burgers rolls is. The animals are comfortable with this person. They feel as if they are able to continue on with their lives. There is an element of jealousy between the speaker and the keeper. The keeper has access to a now secret which no one else can see. जो एक कीपर है सिर्फ वही जानता है कि ये जंगल में कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ पे डव जो बर्ड है
वो अंडे देती है, कहाँ वो बैठती है, कहाँ घूमती है। और जो बर्जर मीन्स एक एनिमल जो कि ग्रीसियस ब्राउन कलर का फर का होता है, जो कि ओमनीवरस होता है, जो बियर के टाइप का दिखता है लेकिन छोटा साइज स्मॉल रहता है। वो भी कहाँ कहाँ घूमता है वो सिर्फ कीपर ही जानता है, उसके अलावा और कोई नहीं जानता है। कीपर यहाँ पे फिजिकली अटेंड नहीं है। Only the keepers to able to see the secret interaction of animals and creating among them freely. Kipling speakers conclude the poem by describing all the things that one might perceive if there is enter the wood at the night. Now in second stanza, yet if you enter the wood of a summer evening late, when the night air cools on the throat rings pools, where the otter whistle his mate, fear not men in the woods, because they seem so few. You will hear the beat of the horse's feet and the whiz of the skirt in the dew, steadying catering through the mystery solitude, as though they perfectly know the old lost road through the wood, but there is no road through the wood. Next stanza, the speaker discusses what happened if one entered the wood on a summer evening late. One could slip into this area that is seeming off limit while no one is watching. The air would be cooling off the day and animal would be relaxed as possible. One might even be able to hear the otter wishing his mates. यहाँ पे अगर कोई समर की इवनिंग में आता है तो उसे क्या कैसा लगेगा, ये सेकेंड स्टैंजा में बताया गया है। सेकेंड यहाँ पे कोई समर इवनिंग में आता है तो वो इतनी शांति रहती है कि जानवर की एक एक आवाज़ भी वो सुन सकता है। किस तरह जानवर अपने मेट से बात करता है वो सब भी वो सुन सकता है। एंड एयर बहुत ज़्यादा कूलिंग रहती है। द एनिमल हैव नो रीज़न टू फियर मैन एज देयर इज़ सो फ्यू पासिंग थ्रू द एरियाज। यहाँ पे एनिमल कोई भी डरता नहीं किसी आदमी से, क्योंकि वो लोग कभी उस लोगों को देखा ही नहीं है। यहाँ पे बहुत कम जन पास होते हैं। इफ़ द रोड स्टिल एग्जिस्ट द वुड नॉट बी इन द केस इफ़ वन इंटर इन टू द वुड एट दिस टाइम देयर माइट बी इवन बी ए detectable sound of the horse's feet beating on the ground. They move without hesitation and without need for a path. यहाँ से अगर कोई एनिमल घोड़ों की आवाज़, पैरों की आवाज़ भी सुन सकता है इजीली, जो कि फिजिकली घोड़ा यहाँ प्रेजेंट नहीं है। हवाओं की सरसराहट को यहाँ पे घोड़े की आवाज़ के साथ में पोएट ने कंपेयर किया है। In the final line, the speaker increased the mystical and mysterious element of this piece by describing how the horses seem to be known perfectly the old lost road through the woods. He concludes with the line, but there is no road through the woods. It has vanished so completely he would not prove to another इट एवर एक्जिस्टेड। यहाँ पे पोएट लास्ट में उदास होकर के कह रहे हैं कि यहाँ पे कभी रोड हुआ करता था, ये मैं किसी को प्रूव भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से वैनिश हो चुकी है, पूरी तरह से ये रोड जो है गायब हो चुकी है। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छा लगा होगा, आप लोग इन्जॉय कर पाए होंगे। थैंक यू।